Fine. I hope I'm audible to everyone. We are going to do oxidation of aldehyde and ketones today. Okay, so please write the topic. Oxidation of aldehyde and ketones. Aldehyde and ketones. So right here. Aldehydes easily get oxidized to carboxylic acid. Oxidized to carboxylic acid, but ketones don't. But ketones don't. Then you write, since oxidation of aldehyde is easy and can be done with a milder oxidizing agent, such as Ag plus and copper 2 plus, Ag plus and copper 2 plus, some Ag plus and copper 2 plus, these reactions are used as test for aldehydic group. So first thing is that aldehydes get easily oxidized to carboxylic acid, but ketones don't. And since that, what does it mean? It means that there will be some reagents, and those reagents are Ag plus and copper 2 plus. If we use these reagents, then aldehyde gets oxidized to carboxylic acid, but the ketones will not get oxidized to carboxylic acid. So obviously, we can have some reactions which will act as test for the aldehydic group. That means if any sample it reacts with these reagents, then that sample will have the CHO or the aldehydic group. So there are two specific tests that we have to learn. Please write this down, raise your hand once you're done, and then we will write those two tests. Rajita, let me know if you're done. Rajita and Deborah. So can you please repeat the second point again? Can you explain it again? Yeah, fine. Sure, no problem. See, you understand that, for example, if I have sample A, there is some sample A, okay? And if I react this with Ag, plus it becomes carboxylic acid, RCOOH. Then I can say that A has what? A is obviously a RCHO and aldehyde. It is not a ketone. So we have some test only because, why do we have some test? Because aldehyde get oxidized to carboxylic acid by some reagents, but ketones, they don't get oxidized. That is why we have these tests. Got it? Yes. So you please write tolerance test. First of all,
टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। When aldehydes react with silver ammonical nitrate, it reduces the Ag positive to Ag. So we are going from what it is doing. Aldehyde has the ability to reduce Ag positive to Ag. और Ag का कैसा कलर होगा? It is silver. So it will be silver, right? And a silver mirror is formed on wall of test tube. On wall of test tube. ठीक है? This test is used for detection of CHO group. Okay. Now, let us see what is this reaction. Please write here RCHO. It will react with Ag, NH3 whole twice. Okay, Ag NH3 whole twice. And outside you will have NO2. So this is a kind of a coordination compound. Okay, this is a kind of a coordination compound, Ag NH3 NO2. Or you can just write Ag positive. That is also enough here. Okay, if you write just Ag positive, that is also enough. Ag positive, this will be in the presence of water, obviously. There will be water here. Now, what it is going to give you? It is going to give you RCOOH. From the aldehyde, it will be getting oxidized to carboxylic acid, and the Ag will be getting reduced to Ag. From Ag positive to Ag. So this is silver. This makes silver mirror. Then you will write next point. Both aromatic and aliphatic aldehydes give tolerance test. Both aliphatic and aromatic and aliphatic aldehyde gives tolerance test. Okay. Ketones don't give tolerance test. Next point that you will write is tolerance test is also known as AKA silver mirror test. Safia, why are you late today? Yes, Safia? Yes, sir. Why are you late today? Safia. Safia, why are you late today? I'm asking.
You're not audible. I'm not audible, or what? Guys, am I audible? Rachita, am I audible? You're audible, sir. Yes, sir. Marimusta, I'm audible, no? Okay. Fadil, you're also late. What happened? Yes, sir. I was trying to join. Network is not proper today. It was getting stuck on the connecting screen. I'm sorry, sir. अच्छा, no problem. पता नहीं सफिया को क्या हो गया. सफिया, am I audible? सफिया को आवाज नहीं आ रही क्या? Safia got disconnected also. Just a second. सफिया, am I audible? Yes, sir. क्या हुआ? आप पहले जवाब नहीं दे रहे थे, आपको आवाज नहीं आ रही थी? Yes, sir. I just rejoined. अच्छा. Why are you late? Sir, it was the prayer time. You sorry. Sir. Oh, अच्छा. Okay. So all of you understood this test now, right? This is given by both aromatic and aliphatic aldehydes. Okay. So if any compound, it reacts with silver ammoniacal nitrate and it forms a silver mirror around the test tube, then obviously it is having a aldehyde or the CHO group. Okay. Next test that we have is the Felling test. Please write the next one. Second. Felling test. Okay, please write here. Felling test is FT. I'm writing it like this. FT Felling test consists of a solution that has freshly prepared Felling solution A and Felling solution B. So what is Felling solution A and Felling solution B? This time. Felling solution A contains Felling solution A. It contains the copper 2 plus ion. And it is generally in the form of copper sulfate. So you have copper sulfate solution in the Felling solution A, and in the Felling solution B, we have sodium, potassium tartarate. Sodium, potassium tartarate. So if you see, tartarate is formed from tartaric acid. Tartaric acid has a formula CH, which is having COOH, CH, COOH, and this CH is having OH group here also. Okay? इस तरह से. Now, this COO, it is having a salt of sodium, Na positive and K positive. CO negative, and Na positive and Na positive. So as you can see, it is sodium, potassium tartarate. Okay, this is your sodium, potassium tartarate. अब Felling solution A और Felling solution B होता है. इससे आप लोगों को क्या मिलता है? You have the Felling solution, freshly prepared. Felling solution के लिए you need Felling solution A and Felling solution B.
So if I have RCHO plus Felling solution, okay, you will mix both of these solution A and B, और आपको क्या मिलेगा? You will get the Felling solution, which majorly it has what copper 2 plus. इसमें आपके पास reactive species है, this copper 2 plus. Now what happens when you react this with Felling solution? You will get RCOO negative, because here we have sodium and potassium ions, plus we will get copper 2 oxide. Okay, so we have here two copper atoms which is having one oxygen atom. So this is having a red PPT color. Okay, this is a red PPT color. What happens when aldehyde reacts with Felling solution? It forms red PPT, and this tells you about the presence of aldehyde group. The important point to note down is aromatic aldehyde, such as benzaldehyde, don't give Felling test, because copper is not able to oxidize benzaldehyde. ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है. Sir, about filling solution A and B, about the components, are those common Viva questions? Yeah, they will ask you in Viva these two, filling solution A and filling solution B, like what are the things that is present, and they will also ask you what is the structure of sodium potassium tartarate. This is one of the questions that is very much asked. All of it done? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so right now we have seen two tests. We have seen Tollent test. Tollent test will be given by RCHO, that means any aldehyde, and it will be given by benzaldehyde also. Okay, but if I talk about Felling test, then Felling test is only given by RCHO. Benzaldehydes won't give you Felling test. Okay, so you have known this much. Please write next, haloform reaction. Okay, this is also type of test for but this is also oxidation reaction. Okay, haloform reaction. Please write aldehyde and ketones with one CH3 group directly attached to carbonyl carbon
directly attached to carbonyl carbon reacts with sodium hypohalite. Sodium hypohalite. The formula for this is NaOX. X can be chlorine, bromine, iodine, or everything to give sodium salt of carboxylic acid with one less carbon atom. Write this down. Let me know once you're done. ठीक है, राइट नेक्स्ट एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज इफ यू हैव NaOH प्लस हैलोजन, this will form NaOX. ठीक है ना? So you can either have NaOH directly, sodium hypohalite, or they will give you these two reagents. ठीक है, so for example, if I have something like this, please see here guys, don't write anything. If we have CH3, then we have CH2, then we have carbon double bond O, and then we have CH3. ठीक है, and I react this with, ऐसे आपको दिया रहेगा NaOH in the presence of, it is supposed you have Cl2. ठीक है, so we have this at least, right? Now NaOH and Cl2 will react and they will form NaOH. तो आपको क्या मिलेगा? Haloform reaction मिलेगा, but you have to see is there any CH3 group in the molecule which is directly attached to the carbonyl carbon? So do we have any fragment which is having carbonyl carbon और इसमें directly क्या लगा हुआ हो? CH3 लगा हुआ हो? Do we have any such fragment? इस तरह का fragment है क्या compound में? देखिए जरा. Yes, sir. There is, right? So this is the fragment that we are looking for. This is the fragment we are looking for. ठीक है, ये आपको fragment मिल गया है ना? So you have CH3 directly attached with the carbonyl carbon. Now what you need to do? What will happen? Reacts with the sodium hypohalite to give sodium salt of carboxylic acid with one less carbon atom. So here, how many carbon atoms we have? 1, 2, 3, 4 carbon atoms in the molecule. I will get a carboxylic acid of how many carbon atoms? 3. 3. ठीक है, very good. So you have CH3, you have CH2, and then you will have C double bond as it is. Instead of CH3, you will have OH. What will happen to this particular CH3? It converts itself to haloform. In the case of chlorine, it will convert itself to chloroform. That is CHCl3. Is this clear, all of you guys? Please tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, try it. All of you guys, please try to answer when I'm asking things. ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा. If you are just writing, it won't help you much. ठीक है, write some reaction. Please write the product for these two.
Done, guys? Yes, Rajita, Safia, Pia, Fadil, Deborah. Doing, sir. Rajita, please send your answers now. Guys, please send me whatever you have done. Something. रजिता, आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं कर दिया, जरा देखिएगा. Like, look how we have done the reaction and how you are doing the reaction. If I write this NaOH and Cl2, or I write NaOH, I hope it is the same thing. You understand that, right? NaOH will and Cl2, they will react and they will make NaOCl only. Correct? इतना आपको समझ में आ रहा है ना रचिता? अब आप देखिए कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है आपके प्रोडक्ट में, क्या बनाया है आपने? That is why I say that please answer when I am asking things, है ना? Explaining के टाइम में जब हम explain कर रहे हैं तो उस टाइम आंसर किया कीजिए. ठीक कीजिए जल्दी से रचिता. You have to make carboxylic acid. आपने carboxylic acid बनाया भी नहीं है. You have also not made any halo form also. फिर नहीं यार, फिया आपने ये रिएक्शन नहीं लिखा है क्या? क्या हो गया गाइस, आप लोग को दिख नहीं रहा आप लोगों को क्या? फिया, did you write this reaction? फिया, did you write this reaction? I have Why? to write it, sir. क्यों नहीं लिखा है आपने? पहले इसी को लिखिएगा ना आप तो. इसको लिखिए, फिर ये प्रोडक्ट देखिए, आपने पता नहीं क्या प्रोडक्ट बनाया है. सफिया, आपने भी क्या प्रोडक्ट बनाया है? कहाँ है गाइस, आप लोग का दिमाग कहाँ है? लाइक यू गाइस आर नॉट लिसनिंग और व्हाट? अरे ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन, कैमरा ऑन, जल्दी करें, जल्दी करें, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग. डेबोरा, फिया, टर्न योर माइक ऑन क्विकली. रजिता, टर्न योर माइक ऑन क्विकली. रजिता, डेबोरा, फिया, turn your mic on quickly. Tell me, how many carbons do I have here? Rajita, Two mic on, carbons. please. Keep your mic on, guys. Please keep your mic on. 2 carbon atoms. Do I have anything, any such group, CH3, directly connected to C double bond O? Do we have any such fragment? Yes or no? Yes, sir. बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है. Fia Yes, doesn't sir. know, sir. Yes, है. कहाँ है? दिखाइए जरा अपनी नोटबुक में. Write the fragment which is this fragment, है ना? इसको खोल के लिखिए, पूरे स्ट्रक्चर को खोल के लिखिए. Write the structure completely and show where do we have this type of fragment. CH3 directly bonded to carbonyl carbon. जल्दी. ध्यान ही नहीं है आप लोगों का. Send it to me on WhatsApp quickly. ठीक है, करेक्ट रचिता. अब एक बात बताओ रचिता, अगर आपके पास if you have such group, then what will happen to that group? It will be converted to what? Carboxylic acid. तो कहाँ है? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया क्यों नहीं? आप बोल रही हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया नहीं है आपने.
और एक बात, that carboxylic acid will have how many carbon atoms? One. फिर कहाँ है वन? क्यों बोल तो रही हैं आप सही, फिर बनाया क्यों नहीं आपने? यू डोंट नो व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? COOH. फिर एंड व्हाट एल्स इट विल मेक, टेल मी? उसके साथ क्या बनाएगा वो? इट विल मेक अ हैलो फॉर्म व्हिच विल हैव अ Iodoform. हाँ आयोडो फॉर्म बनेगा जहां पे CH3 होगा। क्या दिक्कत थी इसमें यार? बताओ तो। अगला सवाल गाइस, व्हाट हैपेंड टू योर, अरे यार भेजो ना, बाकी लोग तो जल्दी भेजिए। रजिता आप जल्दी कीजिए इसको, फिर अगला वाला भी जल्दी कीजिए। सही सही बिल्कुल। सफिया, फिया, डेबोरा, प्लीज सेंड मी द complete open structure and show me where do I have the CH3 directly bonded to carbonyl carbon. jaldi, you have to expand this structure and send it to me, this structure. और आप लोग दिखाइए हमको कहाँ पे है, if it is there or not. जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी। क्यों नहीं आया मैसेज? अभी तक नहीं आया, जल्दी करें। ठीक है। Now Fia, tell me, if it is having this group, then what it will form? What will it form? Read the line and tell me. आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा फिया, ये बताइए तो। Did you write this? Yes, sir. जी बताएं। It will form What it will form? carboxylic acid With how many carbon atoms? with the carbonyl carbon. No, with how many carbon atoms? पढ़ो इस लाइन को पूरा पढ़ो, तब समझ में आएगा। पढ़ो, सब सवाल, सब जवाब है इसमें। 1 CH3, sir. 1 CH3। 1 अरे carbon यार, atom. 1 कार्बन आटम बोलेंगे ना तो CH3 कहां से आएगा? एक कार्बन है और वही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया आपने, और फिर इट विल गिव यू अ हैलो फॉर्म। इन दिस केस इट इज गोइंग टू गिव यू आयोडो फॉर्म। रजिता ने पूरा बनाया। रजिता ये बताइए, आपका सेकंड वाला सही है? रजिता, इज योर सेकंड वन करेक्ट? No, sir. I think it's CH3 and then COOH, right? फिर या क्यों आपने ऐसे लिखा बताइए? क्या हार्ट अटैक देंगे क्या आप लोग किसी दिन हमको? हाँ, इतना गलत आप लोग करते हैं बताइए। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा स्टेप वाइज करें ना बस, आप लोग तो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड सफिया। अरे CHOO, अरे ये आपने फर्स्ट वाला सही नहीं है ना आपका। फर्स्ट वाला कैसे सही है सफिया बताइए? यहाँ पे कितने कार्बन हैं इन द रिएक्टेंट? हाउ मेनी कार्बन डू वी हैव सफिया? हाउ 2. मेनी कार्बन? 2। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 1. कितने हों फिर? will be HCOOH plus CHBr, sorry, CHI3 in this case. Here I have 2 carbon atoms और एक CH3 C double bond वाला ग्रुप है हमारे पास, so I will be having CH3COOH. यहाँ पे 3 कार्बन हैं, so carboxylic acid will be having only 2 carbon atoms plus I will have CHBr3. चलिए छापिए जल्दी। हाँ, ये फिर गलत है ना आपका, फिर या सही है? बताओ तो। एक कार्बन बोल के आप 2 कार्बन लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या कर रहे हैं आप फिर? You only said ना 1 carbon atom will be there in the carboxylic acid, yes or no? Yes, sir. फिर ध्यान दीजिए ना, कहाँ ध्यान है आप लोग का गाइस? जल्दी ठीक कीजिए इसको और फिर अगला लिखिए। Is everyone done? Yes or no? Please tell me.
Yes, sir. चलिए जल्दी से, एक बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। एक और लिख लीजिए, ये भी, और जल्दी बनाइए। वन मोर मिनट यार, बड़ा टाइम ले रहे हैं आप लोग आज तो, बहुत ही ज्यादा। जैसे वन मोर मिनट, जल्दी। वेरी गुड रजिता, सही है, वेरी गुड। गाइस टाइम इज ओवर, प्लीज सेंड योर आंसर्स क्विकली, प्लीज सेंड योर आंसर्स क्विकली। प्रिया, CH3 होगा, ठीक है, CH3 होगा, प्रिया है ना, CH2 नहीं होगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। व्हाट हैपेंड सफिया एंड डेबोरा, डेबोरा तो एक भी आंसर नहीं भेजा है गाइस, व्हाट, डेबोरा क्या हो गया? सफिया सेंड योर आंसर्स क्विकली। सफिया, am I not audible? Yes, sir. I just sent. नहीं, पहला वाला सही है आपका, दूसरा वाला आपने कंप्लीट नहीं किया बस, है ना? Yes, sir. ठीक है, पहला वाला सही है आपका, CH3 होगा बस, CH3 इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड COOH, ठीक है, प्लस you will have CH3, here you will have the benzene ring with COOH plus the CH3। डेबोरा ने अभी भेजा, सही है डेबोरा, ठीक है।
देखिए, even if you send me half of the answer ना, I will understand that it is आप समझ रहे हैं सही या नहीं समझ रहे हैं सही, ठीक है, जल्दी भेज दिया कीजिए बस, ठीक है. Now this particular compound that we get as a byproduct here, which is CHI3, it is yellow in color. Okay, this yellow PPT, but only CHI3, not each and every haloform is yellow PPT. Only the iodoform is yellow PPT. So from this haloform reaction, we can write a test that gives the detection of, or rather it detects what? It detects the CH3 C double bond O fragment. Please write iodoform test. We'll write here iodoform test. मेरा इरेजर काम करना बंद कर दिया, इरेजर काम नहीं कर रहा. Iodoform test. You'll write compounds with CH3 C double bond O fragment give yellow PPT CHI3 on treatment with sodium hypoiodide, NaOI. All of you got till here? Yes or no? Please tell me. कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से देखिए. So we have done 3 tests today. Conclusion में हम लोग क्या लिख सकते हैं? Please see conclusion. So in conclusion, we can write there are 3 tests. एक क्या है? Tolerance test. Then we have the filling test. And then we have the iodoform test. ध्यान से देखिए, अभी लिखिएगा मत, iodoform test. So if I talk about tolerance test, then tolerance test is given by RCHO. It is data hai. Also, if you have any aromatic aldehyde, this will be given by aromatic aldehyde also. But ketones don't give this test. Ketones ये test नहीं देते हैं. Similarly, if I talk about Fehling test, only aldehyde gives Fehling test. If I talk about aromatic aldehyde such as benzaldehyde, it won't give Fehling test. And any ketone, they also don't give the Fehling test. Iodoform test, it detects, क्या detect करता है? It detects CH3 C double bond O fragment. If this fragment is present, then the iodoform test will be given. Write this down quickly, raise your hand once you are done, then we will do a series of questions. देखिएगा इस सवाल को, फिर हम बताएंगे किस तरह से सवाल को करना है, ठीक है? Sophia is done. Guys, please raise your hand once you're done. And please don't do this question. I will tell you how to do this question. Deborah, Sia, Rajita, please raise your hand if you are done. Okay, Deborah is done. Okay, everyone is done. Sia, you are done. Sia, are you done? If you are, ठीक है. See here, guys, how we are going to do this. Please see. हमारे पास 3 टेस्ट है. You can lower your hand, guys. You can lower your hand. Please see. We have 3 tests ना. हमारे पास है tolerance test,
हमारे पास है फेलिंग टेस्ट और हमारे पास क्या है, हमारे पास है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, these are the three tests that we have. What are the compounds that we have been given? We have been given C6H5. C6H5 is obviously benzene ring, which is connected to C double bond O and CH3. C double bond O and CH3. ठीक है, तो पहले ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है? दिस इज व्हाट एल्डिहाइड और कीटोन, टेल मी गाइस, क्या है ये, एल्डिहाइड है या कीटोन है? Ketone. कौन एल्डिहाइड है रे भाई? हु इज एल्डिहाइड? आई हर्ड एल्डिहाइड, रजिता ना? Yes, sir. I'm sorry. I got confused. कीटोन है भाई, क्या हो गया रजिता आपको? दिस इज कीटोन। ठीक है, पहले तो आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपको क्या आ गया, C6H5CHO। C6H5CHO, ये आपके पास क्या है? दिस इज एल्डिहाइड, बट स्पेशली इफ आई से इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ध्यान से सुनिए। अरे लिखना हम ना निकल के मॉर्निंग आप लोग लिखिएगा, तो लिखिए मत। सफिया क्या कर रहे हैं आप? सफिया व्हाट आर यू? आप पेन को ऐसे रखिएगा, पेन हमको दिखाते रहिए जब सुन रहे हैं आप बात को। पेन दिखाइए हमको, शो मी योर पेन। हाँ लिखना, अरे नहीं ऐसे वैसे ऐसे करके रखिए, दिखाते रहिए आप, पेन को दिखाते रहिए। लिखना नहीं है कुछ आपको, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों लिखना है आपको इतना। सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए। We have a ketone and what do we have? Tell me guys. कीटोन और क्या है हमारे पास? Benzene. दूसरा क्या है? हाँ बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड है ना, कीटोन है हमारे पास और एल्डिहाइड, कीटोन है। ठीक है, अब बताइए, विल कीटोन गिव टॉलरेंस टेस्ट? बोलो, क्या कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देगा? यस और नो? रे भाई चैट में, चैट में, चैट में No, sir. नो नो, कोई असल में जवाब नहीं देता है, इस वजह से हम चाहते हैं चैट में दें आप लोग जवाब। ठीक है, इट विल नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। विल इट गिव फेलिंग टेस्ट? No. Will it give filling test? Guys, tell me. No. No, sir. No. Will this give iodoform test? Will this Yes. give iodoform test? Very Yes, good. sir. देगा ना, because we have CO, CH3, CH3 C double bond वाला है। ठीक है, अब सुनिए, will aldehyde give? Will aldehyde, this aromatic aldehyde, will it give tolerance test? Yes. Yes, sir. Will it give filling test? No. No. Will it give iodoform test? Yes, sir. कहां से यस रे? कहां से यस? हाँ जी, पिया, पिया कहां से यस? It won't give, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का ना? Aromatic don't give. एरोमेटिक की बात ही नहीं है। अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है बताओ तो, पिया? आयोडोफॉर्म की बात ही नहीं है। Ketones give, sir. नहीं, कौन बोला कीटोन देता है? अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, देखो जरा, कौन बताएगा? टेल मी गाइस, कौन बताएगा? Can you repeat your question? Will, like what compounds give iodoform test? Sir, Tell me. COCH3 वाले compounds. The compounds which have which fragment? ये तो लिखा नहीं है आपने, क्या किया? Detect Yes, sir. CH3 तो फिर तो आप ये बोलिएगा ना, it does not have any methyl group directly attached with carbonyl carbon. इस कार्बोनिल कार्बन को देखेंगे तो हमारे पास we don't have any CH3 attached to the carbonyl carbon ना, तो कीटोन कहां से आ गया उसमें? C double bond O और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, so we don't have any CH3 group, so this will not give iodoform test. All of you got Yes, this? sir. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, neither ketone gives filling test nor aldehyde, this aromatic aldehyde gives filling test. Can we use filling test to distinguish between these two? No. नहीं ना, तो दोनों ही नहीं देंगे तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बताइए? बात सही है सबकी? So we can either use what we can use tolerance, या हम tolerance test को यूज कर सकते हैं। So we will write ketone will not give tolerance test, and sorry, you can write this compound
will not give tolerance test, but this aldehyde will give tolerance test. या फिर we can use iodoform test also. We will say that this will give iodoform test and this will not give iodoform test. बात समझ में आई? अरे हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए राइट दिस डाउन. अब लिखिए आराम से. Confident yes or no, please tell me guys. Is everyone done writing? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? Yes, yes or sir. no? Thank you very much. अब चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन. आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, TFI कर लीजिएगा. ठीक है, यू विल राइट TFI, उसके बाद क्रॉस टिक और बताइए कौन सा हम यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश. So are we supposed to send it to you? Yep, you have to send it to me.
रचिता आप जल्दी तो कर लेते हैं लेकिन गलत रहता है फिर। वी कैन टेस्ट, अच्छा जी, वी कैन यूज ऑल दीज टेस्ट। हाँ, टॉलरेंस ये टॉलरेंस देगा, ये नहीं देगा, वेलिंग देगा, ये नहीं देगा, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Am I wrong? अरे नहीं नहीं, मेरा वेरी गुड इतना सार्कास्टिक है क्या? क्या It आपको समझ नहीं sounded, आ रहा? no, it नहीं नहीं sounded नहीं sarcastic. नहीं नहीं, इट्स नॉट सार्कास्टिक। हम जनरली सार्काज्म नहीं करते, हम डांटते हैं, सीधा बोलते हैं गलत है, बेकार है बिल्कुल। ठीक है, अगर गलत रहता तो, बट इट इज राइट, दैट इज आई एम सेइंग कि वेरी गुड। अरे हम शरीफ गांव से आते हैं, हमको सार्काज्म वार्काज्म नहीं आता है ना, कोई हमको सार्कास्टिक कमेंट करता तो हम सार्कास्टिक समझते हैं। ठीक है, आई कम फ्रॉम विलेज एरिया, आई हैव जस्ट फॉर, ठीक है, ओके फाइन। सफिया, क्या लगता है सफिया, आपका सही होगा गलत होगा? सफिया, No idea, sir. यार फिर से सफिया एक बार और कर लो, ठीक है, थोड़ा रीचेक, रीचेक करो यार सफिया। Okay, sir. देखो जरा देखो, एल्डिहाइड कीटोन लिखा तो सही सही है आपने, लेकिन ओ माय गॉड, गाइस सेंड इट टू मी, जल्दी भेजें बाकी लोग। रजिता यार जब तक, पिया कुछ मिला, सॉरी पिया बोल रहे हैं, माय बैड। सफिया आपको कुछ मिला, कुछ मिस्टेक मिला? No, sir. नहीं मिला आपको, बड़ा अफसोस है यार, तब तो आपको नहीं मिला मिस्टेक तो। अच्छा फिया, व्हाट डज दिस मीन कि हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? फिया फिया पिया किशकर, टेल मी, कौन सा टेस्ट यूज कर Yes, सकते हैं, वो sir. लिख दीजिए, लाइक यू हैव डन ना, टिक क्रॉस, तो उसके हिसाब से बताइए आप कि वी कैन यूज दिस टेस्ट, और वी कैन यूज दिस टेस्ट, और वी कैन यूज दिस टेस्ट, या फिर वी कैन यूज दिस टेस्ट, विच टेस्ट वी आर गोइंग टू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। वो लिखिएगा, लिखिएगा, डोंट से, राइट इट डाउन। चलो गाइस, डेबोरा का आंसर नहीं आया है, और सफिया का आंसर गलत आया है, ठीक है। Is it correct? I can write it with pen. Is it correct? हाँ ये सही है आपका। एक तो हम आप लोग को बोलते हैं कि हमेशा पेन से ही लिखने के लिए, जो गलत होगा वो आपको पता रहे कि क्या गलत हो रहा है मेरे से खुद, है ना, तो पेन से ही लिखा कीजिए, पेन से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए इसको, फिट के नाम से, कैसे फिट के नाम से याद कर लेंगे। ओके, डेबोरा हैज सेंड, देखते हैं डेबोरा का क्या आंसर है, कैसा आंसर है। ठीक है डेबोरा, आपने लाइक यू हैव एनालाइज्ड इट वेरी करेक्टली, व्हाट विल बी द कंक्लूजन कि हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। कंक्लूजन हमने पिछले वाले रिएक्शन में बोला था, लिखाया नहीं था, तो आपको लिखना है वहां पे कि वी आर गोइंग टू यूज दिस टेस्ट, है CH3 CH2। तो आप देखिए यहाँ पे CH3 CH2 एंड CHO, तो दिस इज एल्डिहाइड, पहले तो हमने ये कंफर्म किया। देन वी हैव 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये आपके पास कीटोन है, सही है सफिया? Yes. अब आप माइक ऑन करके जरा हमें बताइए, लाइक व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, आपने कैसे किया है इस सवाल को, कैसे अप्रोच किया, बताइए जरा। पहला आपके पास फिलिंग टेस्ट है, बोलिए, सबसे पहले आपने क्या बोला, खुद को बोला होगा, खुद को समझाया होगा ना, ये देगा नहीं देगा। माइक ऑन करें, बताएं, माइक ऑन करके बताइए। अरे आवाज नहीं Yes. आ रही है क्या? हाँ बताएं, क्या किया आपने, जरा बताइए। So, aldehydes can give Felix test and tolerance test, ठीक है, but not iodoform test. सॉरी, But not iodoform test. नहीं एल्डिहाइड की बात मत कीजिए ना, आयोडोफॉर्म में ऐसे तो मत बोलिए कि क्या कोई भी एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? बताओ सफिया, No idea, sir. कोई भी एल्डिहाइड,
नो आइडिया, क्यों नहीं आइडिया है यार? आपको क्या चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, बताओ? व्हाट फ्रैगमेंट डू यू नीड फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट? CH3C double bond O. इतना ही चाहिए ना? अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दें हम, तब तो ये एल्डिहाइड है, Yes, sir. और ये फ्रैगमेंट भी है। Yes, sir. तो आपका ये स्टेटमेंट कहना कि एल्डिहाइड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट राइट। आप ये कहिए दिस एल्डिहाइड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। थोड़ा सा करेक्शन है, मे बी आपने मतलब सही सोच के बोला हो, बट आपने जो स्टेटमेंट यूज किया वो गलत है, हम तुमसे बोल दें, ठीक है? व्हाट यू विल से, दिस एल्डिहाइड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यही मतलब था आपका? Yes, sir. Since it does not have any CH3 that is directly bonded to carbonyl carbon, यही मतलब था आपका? Yes, sir. चलिए अब आते हैं कीटोन पे, बताइए क्या कीटोन फिलिंग टेस्ट देगा? No, sir. तो आपने भाई टिक क्यों किया हुआ है? Sorry, sir. सॉरी क्या सॉरी? क्या सॉरी? टिक आपने क्यों टिक किया ये बताओ आप जरा। आपने ये खुद से सवाल नहीं पूछा क्या कीटोन ये टेस्ट देगा, पूछा नहीं आपने? Sir probably got confused. हम पूछ रहे तो सही जवाब दे रहे हैं, आप खुद से पूछ रहे तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ सफिया, चलिए ठीक है, बताइए ये तो नहीं देगा फिलिंग टेस्ट, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? Yes, sir. ठीक है, क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? No. नो। दैट मीन्स आप ये समझिए जरा, अब नाउ ऑल ऑफ यू गाइस विल लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फिया एंड आल्सो डेबोरा, आपको ये लिखना था इसके बाद, प्लीज हियर गाइस, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, कि हम यहाँ पे व्हाट वी कैन यूज द फिलिंग टेस्ट आल्सो ना, बिकॉज सी इफ वी यूज द फिलिंग टेस्ट देन दिस एल्डिहाइड विल गिव द टेस्ट और ये कीटोन नहीं देगा, तो डिस्टिंग्विश हो गया, हाँ या ना? बोलो भाई। अगर हम Yes. फिलिंग टेस्ट को यूज करते हैं तो आपके पास जो ए कंपाउंड है ना, ये ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड फिलिंग टेस्ट करके और यहाँ पे क्या दे देगा, रेड पीपीटी। बट बी कंपाउंड जो है जब वो फिलिंग टेस्ट से पास करेगा इट वोंट गिव एनीथिंग। बात सही है, हाँ या ना? समझ में आ रही बात सबको? अरे बोलो भाई, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हाँ हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, यस सर, थक गए क्या? तो थक गए बिल्कुल, है ना? मास्टर कितना बुलवाता है हम लोगों से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम ए का आयोडोफॉर्म टेस्ट करें, क्या करें ए का, बोलो भाई? ए का आयोडोफॉर्म Test. NaOI करें, सो विल वी गेट येलो पीपीटी? विल वी गेट येलो पीपीटी? नहीं मिलेगा ना भाई, क्रॉस No, लगाया हुआ। sir. No, sir. बट अगर हम बी का कराएं आयोडोफॉर्म टेस्ट NaOI, आई विल गेट येलो पीपीटी। येलो पीपीटी Yes, मतलब sir. CH3, याद आया सबको? उसी Yes, तरह sir. अगर हम टॉलरेंस टेस्ट करें तो ए विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, और टॉलरेंस टेस्ट देने के बाद ये क्या देगा, व्हाट विल इट गिव? बोलो भाई, क्या देगा? टॉलरेंस टेस्ट में क्या है? Silver mirror, sir. सिल्वर मिरर, तो ए चीज ठीक है, या फिर हम क्या देते हैं, सिल्वर मिरर, है ना? वेरी गुड, सिल्वर मिरर इज बेटर आंसर, सिल्वर मिरर, ठीक है, सिल्वर मिरर। बट if B will react with the tolerance reagent, with the tolerance test, अगर कराएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. तो आपको इस तरह से देखिए, और अच्छे तरीके से आपको लिखना है, ये हम बता रहे हैं, दिस इज अप्रोच, ठीक है, दिस इज द अप्रोच, यू कैन राइट इट लाइक, आप ब्यूटिफाई करने में तो आपको माहिर होंगे ही, है ना? क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक आप लोगों ने क्या सीखा है? दिमाग लगाना तो नहीं सीखा है, आप लोगों ने सीखा है आंसर कैसे लिखना है, कम से कम इतना सीखा ना, लंबा लंबा आंसर आपको ही करना है ना? अब इस तरह से भी आप लिखिएगा ना अगर, तो बोर्ड में आपको मार्क्स मिलेगा, मेरी गारंटी। आपको बोर्ड से मार्क्स, आप ऐसे लिख दो, अगर इसमें एक सेकंड, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, आपको बस नाम लिखना है कि फेलिंग टेस्ट देना है, ठीक है, या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट देना, बस नाम लिख देना है कि इस टेस्ट से हो जाएगा। आपको रिएक्शन नहीं पूछा ना, यू डोंट हैव टू राइट द रिएक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है? तो बोर्ड की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन हाफ ईयरली में आपके मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे हमको नहीं पता, पास में हाफ ईयरली में तो आपके टीचर पर डिपेंड करेगा ना। आई नो सीबीएसई, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमको सीबीएसई के बारे में पता है, बट आपके टीचर के बारे में नहीं पता है। सो हम तो लेकिन बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, तो हाफ ईयरली में ना कैसे लिखना है आप लोग अपने टीचर के हिसाब से लिखिएगा, बोर्ड जब आएगा फिर हम बताएंगे कैसे लिखना है। चलिए अब आ जाते हैं बेंजल्डिहाइड का फिट कराते हैं। बेंजल्डिहाइड को क्या कराते हैं,
फिट कराते हैं, FIT। बताओ फेलिंग टेस्ट हाँ या ना, जल्दी बोलो, फेलिंग टेस्ट हाँ या ना, बोलो भाई लोग। बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट हाँ या ना, एसिटोफेनॉन ये होता है। No, sir. No, sir. नो। आयोडोफॉर्म टेस्ट, No, sir. नो। टॉलरेंस टेस्ट, Yes, sir. Yes, sir. यस। फेलिंग टेस्ट, कीटोन का फेलिंग टेस्ट, एसिटोफेनॉन का फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, No, sir. बोलो। No, sir. नो। आयोडोफॉर्म टेस्ट, Yes, sir. यस। टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, No, sir. नो। सफिया और फिया वगैरह बताएंगे, रजिता आप बताइएगा, ठीक है। कैन वी यूज फेलिंग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दीज टू, चैट में बताएं। No, sir. नो, दोनों का आंसर नो। कैन वी यूज आयोडोफॉर्म टेस्ट, Yes, sir. कैन वी यूज टॉलरेंस टेस्ट। Yes, sir. क्लैरिटी आई आप लोगों को टेस्ट के मामले में, ठीक है। इनमें से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। इफ यू सी, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कार्बोनिल कंपाउंड